Yes, so hello students. So this is a series, special series I'm starting from today, and this is specially for the students of, or rather, who are going to appear for MHT-CET 2026. As you are aware that from this time, this year, there are two attempts that you will be, uh, the two chances that you will be getting for MHT-CET. And that's the good news, but at the same time, the first attempt will be very much early. So I'm targeting for the students who are going to appear the next part, that is the second part. So what I'll be doing in this series is I'll be going chapter wise and topic wise. I'll be covering all the PYQs which has been asked till date in CET. Okay, and I'll be discussing the solution. But before the solution, very important part, I am going to discuss the concepts of every chapter. So concepts बहुत important है ये करने के लिए, and I'll be giving all the shortcuts, क्योंकि अगर मैं खुद इस एग्जाम में बैठ रहा हूँ तो what I'll be doing, that I'll be sharing with you. So all the shortcuts will be discussed, all the concepts will be discussed, all the PYQs will be discussed, and we are going chapter wise. So today we are going to start with the first chapter, that is straight lines, which was taught to you in 11th standard. But as you are aware, some part of 11th standard and some part of and complete 12th standard will be asked in the exam. So we are starting with 11th standard. मुझे पता है आप लोग थोड़ा भूल गए होंगे, 11th standard का शुरुआत का चैप्टर था ये straight lines. Okay, so today I'm going to discuss very basic part. So today only theory, no problems, no numericals, nothing. Next class will be numericals. I'll be starting with the numericals, and very important thing, I'll be giving you shortcuts. Okay, so let's begin. I'll be sharing with you the screen right now. Okay, so to share the screen, I hope the screen is visible for you. Okay. So we are going to start with straight lines, and very interesting part. I'm going to start with a very basic thing, that is coordinate geometry, that you might have studied in maybe 8th 9th standard में आपने पढ़ा, या 10th standard में जो आपने पढ़ा था. We are going to discuss that also here. Okay, so I'll be starting with coordinate geometry. What is basically coordinate geometry? Coordinate geometry में क्या होता है कि there are two axes. One is x-axis and the other one is y-axis. Right, these two axes or these two lines are perpendicular to each other. So can you see this is called as x-axis and this is called as y-axis. Now these two axes, they divide the whole plane into four parts. The point where they intersect each other is called as origin. Horizontal line is x-axis, vertical line is one y-axis, and they divide the plane into four parts. ये जो आपके सामने जो दीवार है या जो भी बोर्ड है, that is a plane. तो plane को चार पार्ट में डिवाइड कर रहा है. Right, in this there are, each part is called as quadrant. Each part is called as quadrant. So what are the quadrants? The word quadra, it comes from the word quadra. So what is quadra? Quadra means four parts. So there are four parts. This is the first part. This is the first part, so this is called as first quadrant. This is the second part, so this is called as second quadrant. This is the third part, this is called as third quadrant, and this is the fourth part, which is called as fourth quadrant. Once again, I'm repeating the word quadrant. It comes from the word quadra. Quadra means four. So quadrant, there are four quadrants. Okay, now any point in the plane, will have two coordinates. One is x coordinate and the other one is y coordinate. Okay, now what is x coordinate? Very interesting part. What is x coordinate? What is the definition of x coordinate? X coordinate is the distance from y axis. So this is x coordinate. Okay, and what is y coordinate? Y coordinate is the distance from x axis. So always remember, x coordinate is the distance from y axis and y coordinate is the distance from x axis. So this is my x and this is my y. Once again, I am writing x coordinate. X coordinate. Do you remember the other name for x coordinate? एक और नाम हमने सीखा था x coordinate के लिए. That name is abscissa. Right, and what is x coordinate? X coordinate is the distance from
y-axis. X coordinate is the distance from y-axis. And what is y coordinate? Y coordinate is the distance. Y coordinate का दूसरा नाम क्या था? Y coordinate, in other words, it is called as ordinate. Okay. Now, it is the distance from x-axis. Okay. Now, last but not the least, we are all aware that in the first quadrant, both the coordinates are positive. We are because we are dealing with the positive x-axis and positive y-axis. In the second quadrant, y coordinate is negative and x coordinate is positive. Okay. In the third quadrant, both are negative, and in the fourth quadrant, x is positive whereas the y is negative. We deal with this जब हम लोग trigonometry में भी करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, right? Now let's go to the next part of it. अगर हमने देखा कि हमारी 11th की जो शुरुआत होगी, so this is something some part of it we have studied till 10th standard. 11th, the chapter was straight lines, but we started with the concept of locus. Okay, what is locus? Locus is a set of points which satisfy the given geometrical condition. We say condition or it can be condition. That means one condition और एक या अनेक दोनों हो सकते हैं. Now, लोकस की सीधी भाषा में हम एग्जाम्पल दे दे तो अगर मैं बताऊं कि अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम दे दे कि यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए ओके नाउ okay, I'll give you one simple example. There is a point. Okay, suppose this point is A, which is 2 comma 3. I'm giving you some example. And if I ask you everyone to find a point which is at a distance of 2 centimeters from A, so everybody will plot different points. और अगर वो पॉइंट्स को हम लोग ऐड कर दे, सबको हम लोग एक साथ जोड़ दे, तो क्या मिलेगा हमको? एक सर्कल मिलेगा whose radius is a 2 centimeter, right? Hence we say that circle is a locus. Okay, now the problem here is यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर का हम रेडियस ड्रॉ करें तो ये सारे पॉइंट्स जो इसके ऊपर है ना, दे satisfy the given geometrical condition. Geometrical condition क्या था? The point which is at a distance of 2 centimeter from A. All right. Now, the problem is every time we are not able to draw the shape. जैसे सर्कल है वैसे बहुत सारे शेप है, शायद आपने अभी तक सुने हैं, कुछ शेप्स आपने सुने, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, और कुछ शेप्स कई शेप्स ऐसे भी है जो आपने कभी जिंदगी में सुने भी नहीं है अभी, और जैसे अगर आप पढ़ाई करने आगे जाते हो तो आपने को आप यू विल बी डीलिंग विद दिस शेप्स. सो वन ऑफ द शेप इज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो लोकस. So the problem is we are not able to draw every time. It is not possible to draw the shape. ये बहुत time consuming process होता है and बहुत बार understanding का भी issue होता है. So what do we do in this? In this, what we do is हम लोग actually locus draw नहीं करते, हम लोग locus का equation निकालते हैं. So we deal with equation of a locus. Now what is equation of a locus? Equation in terms of x and y. Any equation in terms of x and y which satisfy the given geometrical condition or condition. So हम इसका एक equation form करते हैं. तो मान लो अगर इसका मुझे equation form करना है, so what was the condition? First I will say that let p x comma y. So let p, तो मेरा पहला स्टेप्स होगा let p x y be any point on the locus. That is the first step.
ठीक है. So we consider any point which is on the locus. Then second step is to write down the geometrical condition. The geometrical condition is length AP is equal to 2. And then the third step, we apply the formula and simplify the equation. Okay. Now how do we find steps to find out? Steps to find इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे निकाला जा सकता है? मैंने आपको स्टेप्स अभी बताए. इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे निकालेंगे? हाउ डू वी फाइंड आउट दिस पार्ट? नंबर 1, कंसिडर, first step is consider x comma y as any point on the locus. Now some of the students sometimes they get confused. देखो ये p जो नाम है ना, हर बार जरूरी नहीं p नाम होना चाहिए. मैंने क्या लिखा है? x comma y. उसको नाम आप चाहे p दो, q दो, a दो, b दो, whatever is your choice. The name is not important. We always consider xy as any point on the locus. That is the first step. The second step is write down the given geometrical condition. That is the second step. Right? And the third step is apply suitable formula. जो भी वहां पे अप्लाई होता है, कौन से फॉर्मूले आने वाले हैं मैं अभी नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा कौन से फॉर्मूले हम लोग डील करने वाले हैं. अप्लाई suitable formula then simplify to get equation of locus. ये 3 steps है. Right? So in the next page, I'm going to show you which formulas are important for you, which you have already studied, but then I'll be discussing again. So let's say, for example, पहला step हो गया यहाँ पे. First step is consider xy as any point on the locus. Second step is write down the given geometrical condition. The geometrical condition is 2 in this case. Now, third step is apply the formula. Apply the formula. What is distance AB? Right? You remember distance formula, a और p का distance चाहिए. A is 2, 3. Right? So the distance is x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square, and that is equal to 2. Now this is the beginning of the third step. You have to we have applied the formula. अब इसको हम लोगों को simplify करना है. कैसे simplify करें? Squaring both sides. So x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square is equal to 4. Okay, now x minus 2 whole square. Okay, so sorry, here it will be x square यहाँ पे x square a minus b का whole square होगा minus 4x plus 4 plus y square minus 6y plus 9 is equal to 4. So if we bring everything on one side, that is x square plus y square minus 4x minus 6y, and यहाँ पे 4 cancel हो रहा है, plus 9 is equal to 0. Alright, so this is okay. Wait a minute. All right, so let's go to the next page. अभी जैसे मैंने डिस्कस किया, so step by step, assuming that, see, even if you have not studied straight lines in 11th standard, I can assure you whatever I am doing right now, it will help you to do these chapters. And see, very important, do not worry about आपने पूरे साल कुछ नहीं किया, 12th में कुछ नहीं किया, whatever it is your problem, it's not important right now. Let us focus or let us यहाँ से निकलने के लिए काम करते हैं. राइट, सो आई विल बी डिस्कसिंग यू वेरी बेसिक थिंग. तो जैसे आपने देखा, मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वेरी बेसिक से स्टार्ट किया है. राइट, सो आई विल बी डिस्कसिंग वेरी बेसिक थिंग्स. सो
which formulas we are going to use? The first one that we are going to use is distance formula. All right. So, okay. So distance formula. So what it says, if A is x1, y1 and B is x2, y2. These are the 2 points. Then what is distance AB? आप लोग कभी स्टेट बोर्ड के बच्चे जो है ऐसे भी लिखते थे, और यू कैन राइट ए डिस्टेंस AB और सिंपली लेंथ AB or simply AB. Everything is one and the same. Then what is the distance formula? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 the whole square. जिनको याद है हमने वेक्टर्स में इसी को आगे लेके गए थे, बिकॉज वेक्टर्स में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई एंड जेड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो वहां पे हम लोग ऐड करते हैं z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. तो क्या सर हम x1 माइनस x2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको? कैन आई राइट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर? यस एब्सोल्युटली, बिकॉज हम लोग सब्ट्रैक्शन करके अगर स्क्वायर लेते हैं तो कोई भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, सो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस ओवर हियर. तो you have the choice, it's your choice. So this is a distance formula. Then the next one is section formula. Now in section formula we actually in 10th standard studied only one formula. Section formula के नाम पे basically जो formula था ना वो था internal division का formula. Whatever you have studied in 10th standard, whether you are from CBSE background, SSC background or ICSE background, ओके. आईजीसीएसई को ये सिलेबस में नहीं था, सो दे विल बी लर्निंग समथिंग विच इज न्यू. सो वट एवर you have discussed as a section formula was actually internal division formula. So let me discuss the formulas over here. So first of all, I'll write if P x1 y1 q x2 y2 are any 2 points and so I'll be discussing 3 things now. Point number 1, R divides PQ internally in the ratio m is to n. Now here we say R divides PQ internally in the ratio m is to n. So कैसे होता है? बेसिकली अगर आपको समझ के लेना है तो ये आपका मान लो PQ है, ठीक है, ये मान लो मेरा P है और ये मान लो मेरा Q है, और यहाँ पे कहीं पे R है जो डिवाइड इंटरनली कर रहा है इन द रेशियो m is to n, right? Then value of R or coordinate of R is mx2 plus nx1 divided by m plus n, और y कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा? my2 plus ny1 divided by m plus n. राइट. अब यहां पे ये होता है ना कि इसका एक हम नोट लेते हैं या रिजल्ट लेते हैं. रिजल्ट में क्या है? रिजल्ट में हम बात करेंगे इफ instead of dividing internally in the ratio m is to n, if R is the midpoint of P and Q, or we can say PQ segment का, राइट. जब वो मिड पॉइंट है तो रेशियो बनेगा 1:1. सी बिकॉज मिड पॉइंट अगर मान लो मैं ये यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और ये मेरा P है, ये मेरा Q है एंड R इज एग्जैक्टली द मिड पॉइंट, तो बेसिकली होता ये है कि रेशियो जो है 1:1 बनेगा, बिकॉज PR अपॉन RQ, बिकॉज मिड पॉइंट है तो इक्वल है, तो PR अपॉन RQ बिकम्स 1, राइट. सो अगर m के बदले 1 यहाँ पे लिखूं मैं, अगर इन दिस फॉर्मूला इफ आई राइट 1 and 1 1 and 1, सो व्हाट विल हैपन टू द फॉर्मूला इज सारा कुछ m और n निकल गया, दिस बिकम्स x1 plus x2 divided by 2 and
y coordinate जो होगा that will be y1 plus y2 divided by 2. Okay, y coordinate will be y1 plus y2 divided by 2. All right. Now the second part of section formula is external division. External division. Okay, this was internal division. This was internal division. So external division is if R divides, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरनल डिवीजन है बेसिकली, ये मैं लिखना भूल गया था. दिस इज इंटरनल डिवीजन, राइट. यहाँ पे R डिवाइड्स PQ externally in the ratio m is to n. What will happen in this case? Now here, if we look at the conditions, if this is the line, right, if this is P and this is Q and R is dividing externally this time in the ratio m is to n, then what is the formula? How it will change? The formula becomes R is equal to mx2 minus nx1 divided by m minus n, whereas y coordinate will be my2 minus ny1 divided by m minus n. Now I'll give you a simple shortcut to remember this. Okay, now कैसे होता है? R डिवाइड सेगमेंट PQ बोले तो PQ लिखना पहले. You do not have to रट्टा नहीं मारना ये फॉर्मूला को. आपको क्या करना है, मैं आपको शॉर्टकट दिखा रहा हूं कि कैसे लिखना है इसको. इफ R डिवाइड्स PQ इन द रेशियो m is to n, ऊपर नीचे लिख दिए, एंड दिस विल गो लाइक दिस, क्रॉस करना है अपने को. अब P का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q का कोऑर्डिनेट x2 y2. समझने की कोशिश करो, यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो m के साथ कौन आएगा? Q आएगा, और n के साथ कौन आएगा? P आएगा. दिस विल गो विथ Q एंड दिस विल गो विथ P. ऑलराइट, तो अगर आप x कोऑर्डिनेट पे फोकस करो तो m के साथ आएगा अभी x2, सो mx2, और n के साथ आएगा x1, दैट इज nx1. सो mx2 एंड nx1. अगर इंटरनल डिवीजन है तो बीच में प्लस डाल देना, और एक्सटर्नल है तो बीच में माइनस आएगा. All right, so this was something. So two things before we start with locus का problems. Locus में हमको समझना x coordinate is the distance from y axis, y coordinate is the distance from x axis, and apart from that, distance formula, section formula, and one more formula that I think Maharashtra board student have studied in 10th standard, that is called as centroid formula. So you need to understand this centroid formula. Centroid क्या होता है? Centroid basically ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं उनको कनेक्ट करने, मीडियंस जो कनेक्ट करते हैं. So suppose if I draw a triangle over here, right, if this is a triangle, okay, and there is a median. What is median? Opposite side को equal part में divide करने वाले को कहते हैं median. Then these are the medians. Then all the three medians are concurrent, and the point of concurrency is called as centroid. इसको कहते हैं centroid. Generally denoted by G. I didn't say always denoted by G. It is, I said it is generally denoted by G. So see, basically मैथ सॉल्व करने तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक तो आपका कॉन्सेप्ट, और दूसरा आपको इंग्लिश समझना है. सो व्हेन आई सेड जनरली, इट इज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑलवेज एंड जनरली, राइट. सो जनरली कैन बी चेंज्ड. So look at this. Now if I say if there is a triangle ABC whose coordinates are x1 y1, B is x2 y2, and C is x3 y3. Okay, and G is the centroid.
आर द वर्टाइसेस, विच मीन्स यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, आर द वर्टाइसेस of triangle ABC, and G is the centroid. Now, in this case, centroid G is x1 plus x2 plus x3 divided by 3. And what will be the y coordinate? y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Okay, so this becomes a centroid formula. All right, so these are the formulas that you should know before you actually start with locus. Okay, now let's come to the next part. locus के बाद आते हैं स्ट्रेट लाइन की शुरुआत होती है बेसिकली, अगर हम टेक्स्ट बुक निकाल के देखिए 11th की, तो इंटरसेप्ट से शुरुआत होती है. सो इंटरसेप्ट व्हाट आर द इंटरसेप्ट? सो लेट अस अंडरस्टैंड इंटरसेप्ट्स क्या होता है. Okay, so suppose if I draw y-axis and suppose if I draw x-axis. Okay, now this is, and there is a line, right? Now if this line is intersecting x-axis at point A at coordinate a comma 0, which means this distance is actually A. And if it intersects the y-axis, this is x-axis and this is y-axis, at point B, let's say the coordinate is 0 comma B, which means that this distance is B. Okay, then we say that x-intercept, what is the x-intercept? It is A, and y-intercept is B. राइट. सो इन सिंपल वर्ड्स, ध्यान से सुनो, लिखने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, सो ध्यान से सुनो. एक्स इंटरसेप्ट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक्स इंटरसेप्ट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स एक्स एक्सिस. एक्स इंटरसेप्ट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स एक्स एक्सिस. Y intercept is the y coordinate of the point where the line cuts y axis. Y intercept is the y coordinate of the point where the line cuts y axis. Right? Now, let's understand the most important concept of a straight line. इसके ऊपर पूरा straight line dependent है. That is called as a slope. That is called as a slope. Right? Now, स्लोप इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेडियंट. सो मोस्टली अपने टेक्स्ट बुक में, महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में इसको वर्ड स्लोप यूज किया, बट दे मे ऑल्सो यूज द वर्ड एज ग्रेडियंट. दोनों एक ही है. व्हॉट इज स्लोप? जर मराठीत मला सांगायचं झालं तर स्लोप जनरली आपण जर डिक्शनरी बघितलं तर स्लोप म्हणजे चढ. सो किती, सो स्लोप का अगर सिंपल मतलब हम टेक्स्ट बुक के या डिक्शनरी के हिसाब से जाए, द अमाउंट ऑफ स्टीपनेस, अमाउंट ऑफ steepness, right? And before that, okay, let me take one more concept before actually I would go to this. तो एक concept ये भी होना चाहिए, आपको समझना चाहिए, inclination of a line. What is inclination of a line? Okay, inclination is the angle made by the line in anti-clockwise direction. Now when I say anti-clockwise direction, basically it is positive, but मैं यहाँ पे लिखता हूँ non-negative angle. Again, non-negative angle. Why do I say non-negative angle? Because सर अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्यों नहीं लिख रहे? Because the angle may be
positive, or it may also be zero, hence I'm saying non-negative angle, right? So the more clear part is non-negative and not positive, right? So angle made by the line in the anti-clockwise direction with positive direction of x-axis, राइट? सो सिंपल भाषा में बताया जाए यहाँ पे, तो व्हाट इज दिस इज द इंक्लिनेशन। देखो ये एक्स एक्सिस के साथ है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन, सो generally denoted by theta. Okay, now let's come back to slope। यहाँ पे आते हैं वापस। What is slope? Slope का definition, if theta is the inclination समझ में आ गया। सिंपल भाषा में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है, राइट? बट हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो जीरो होगा। इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन, see each and every word, it is very important when it comes to concepts. So again and again I'm repeating, concepts are very important, then English is important। आपको इंग्लिश समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं तो बहुत आसान काम है। थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, देन ग्रेडियंट या स्लोप जो कहते हैं दैट इज tan थीटा, प्रोवाइडेड थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2। आपको तो याद होगा, क्योंकि अगर थीटा π/2 होता है, आपने देखा है tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा है। बट यहाँ पे मैं आपको पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इसका। ओके, ना इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले नोट कर लेते हैं, फिर इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन हम करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अब जरूरी नहीं है कि हर बार हमको इंक्लिनेशन दे। अगर हमने देखा है नोट्स या नोटबुक्स या टेक्स्ट बुक्स में हमने देखा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको कोऑर्डिनेट देते, तो कोऑर्डिनेट अगर देते हैं, सो इफ ए पॉइंट इज गिवन एज x1 y1 and B point is given as x2 y2, तो देखो अगर इंक्लिनेशन दिया है तो स्लोप का वैल्यू कितना है, tan थीटा है, राइट? लेकिन अगर पॉइंट्स दिए हैं तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m, which is slope is y2 minus y1 divided by x2 minus x1, या फिर इसको y1 minus y2 divided by x1 minus x2 लिख सकते हैं। प्रोवाइडेड, सारे कनेक्टेड है ये चीजें जो हम बात कर रहे हैं, प्रोवाइडेड x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि अगर x1 एंड x2 इक्वल है तो मतलब वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बन गई। अगेन आई रिपीट, इफ x1 इज इक्वल टू x2, बिकॉज x क्या होता है, इफ दिस इज द y एक्सिस, if this is the y axis, distance from y axis is x coordinate, so if I draw a line which is parallel to y axis, it will have y x coordinate same everywhere, hence if x1 is equal to x2 की बात कर रहे हैं, that means I am talking about a line which is parallel to y axis। number 2, point number 2, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको लॉजिकली मैं आपको सारे शॉर्टकट्स दे रहा हूँ समझने के लिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मान लो ये आपका, ये आप चल रहे हैं, ये रास्ता है आपका और ये रास्ते पे आप चल रहे हैं, राइट? तो अगर ये पैरेलल टू, ये रास्ता मतलब कैसे है, हॉरिजॉन्टल है, वेट अ मिनट, wait a minute, let me explain you in a proper way, I just want you to understand this। okay, so
I stop? Okay. Okay. Let me make you understand this. So if this is you're walking like this, let's say. So this is a line, let's say, is parallel to x-axis. तो अगर वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो देर इज नो स्टीपनेस. देर इज नो स्टीपनेस का मतलब है there is no gradient, there is no slope, which means slope is zero. For any line parallel to x axis, slope is always equal to zero. यू हैव टू रिमेंबर. और अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे अगर हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, विच इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देर इज नो स्टीपनेस. देर इज नो स्टीपनेस, दैट मीन्स देर इज नो ग्रेडियंट. देर इज नो ग्रेडियंट मतलब स्लोप इज इक्वल टू जीरो. बट इफ आई आस्क यू बाय एनी वे, अगर आप सुपर ह्यूमन नहीं है, सुपर पावर आपके पास कुछ नहीं है, इफ यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एंड इफ आई आस्क यू टू वॉक ऑन अ वॉल, इज इट पॉसिबल फॉर यू? डेफिनेटली नो. राइट? अगर आप सुपर ह्यूमन नहीं है, अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है हमारी तरह, तो आप ये दीवार पे चल नहीं पाओगे. लेकिन अगर ये दीवार की बात करें, दिस इज समथिंग, इफ यू लुक एट इट, इट इज अ लाइन पैरेलल टू y axis. So for any line parallel to y axis, because आप चल नहीं सकते हो, the slope is not defined. अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो, थियोरेटिकली बात करें तो tan थीटा है, tan 90 हो जाएगा, which is not defined. So once again, a very shortcut thing you have to remember, that is, if a line is parallel to x axis, slope is zero. Imagine you are walking on a normal road. Okay, and if a line is parallel to y axis, slope is not defined, because you will not be able to walk on a wall. So point number 2, slope of line parallel to x axis is equal to 0. Point number 3, slope of a line parallel to y-axis is always not defined. Possible नहीं है दीवार पे चढ़ना. Right? Okay. Next. Point number 4. If M1 and M2, if M1 and M2 are slopes of two lines, and point number 1, if the two lines are parallel, एक दूसरे को parallel है, ठीक है. अब देखो, हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ा सोचते हैं, मतलब जो डेफिनेशन दिया उसके बारे में कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है. तो आप, जैसे मैंने कहा था, स्लोप इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ स्टीपनेस. राइट? नाउ इमेजिन हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, आपके पास टू व्हीलर है, मेरे पास भी टू व्हीलर है, हम गाड़ी पे जा रहे हैं, एक ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं. ओके, वंस अगेन अंडरस्टैंड दिस. once again understand this. If we are we are on a bridge, और ये ब्रिज ऐसे चल रहा है, राइट? और अगर ब्रिज पे जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, एंड वी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दैट मीन्स दोनों के लिए अमाउंट ऑफ स्टीपनेस तो सेम ही रहेगा. इसका मतलब दोनों का स्लोप सेम रहेगा. So if the two lines are parallel to each other, slopes are equal. If the two lines are parallel to each other, then the slopes are equal. Okay. Now, let me write this on the board. Then slopes are equal. Second, naturally हम लोग parallel की बात करेंगे तो perpendicular की बात भी करेंगे. If the lines are perpendicular, देन द कंडीशन, इसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आपको याद रखना है.
प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन जो है इसका -1 होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू -1। इसका प्रैक्टिकल यूज भी मैं बताऊंगा। एक्चुअली बेसिकली इससे ये भी पता चलता है कि m2 इज -1 अपॉन m1। तो मान लो आपको एक स्लोप मालूम है, तो मान लो आपको एक स्लोप मैंने दे दिया, चलो एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपको बोला कि एक लाइन का स्लोप 2/3 है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन अगर का स्लोप चाहिए तो दैट विल बी -3/2। बिकॉज उसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें अगर आपको देखा जाए तो आपको एक चीज दिख रही है, माइनस साइन दिख रही है, और दूसरी चीज दिख रही है उसका रेसिप्रोकल दिख रहा है। एक माइनस साइन दिख रही है यहाँ पे, और दूसरा m1 का रेसिप्रोकल दिख रहा है। तो मैं हमेशा इसको याद रखता हूं। I remember this is not the word from the textbook. This is called as negative reciprocal. इसको याद रखना, negative reciprocal. Negative reciprocal का मतलब क्या है? एक चीज है आपको माइनस साइन करना है, और दूसरा चीज है आपको रेसिप्रोकल करना है। तो माइनस साइन का मतलब क्या है? साइन चेंज करना है। तो मान लो अगर एक का स्लोप है 6/5, ठीक है, -6/5 है, तो दूसरे का स्लोप हो जाएगा 5/6। तो एक काम करो, रेसिप्रोकल लो और साइन चेंज करो, रेसिप्रोकल लेके साइन चेंज करना है आपको हर बार। ऑलराइट, नाउ सो लेट मी कम टू द स्क्रीन। सो आज हमने 3 चीजें सीखी है, और कई चीजें मतलब आज जो मैंने सिखाया है आपको, आई जस्ट रिवाइज एंड रिपीट वॉट एवर वी हैव लर्न। पॉइंट नंबर वन, वी लर्न अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये देखा था कि दो लाइंस होती है, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस, जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को एट अ पॉइंट O, which is called as origin. These two lines divide the whole plane into 4 parts. Each part is called as quadrant. Any point in the plane will have two coordinates, x coordinate and y coordinate. x coordinate को दूसरा नाम है एब्सिसा, y coordinate को दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। x coordinate is the distance from y axis and y coordinate is the distance from x axis. इसके बाद हमने देखा था कि अगर हम लोकस की बात करें, लोकस क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स विच सैटिस्फाई द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ये तो डेफिनेशन की बात हुई, लेकिन हम हमेशा लोकस के बारे में जब बात करते हैं तो हम उसका इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन निकालने के 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1, कोई एक एक्स वाई पॉइंट कंसीडर करना है लोकस पे। स्टेप नंबर 2, फॉर्मूला अप्लाई करना है। एंड स्टेप नंबर 3, आपको उस फॉर्मूला, आई एम सो सॉरी, आई रिपीट। स्टेप नंबर 1 इज एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द लोकस। स्टेप नंबर 2 इज कंडीशन लिखना है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन। थर्ड स्टेप में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। फॉर्मूला कौन से होते हैं? यूजुअली ये होते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फार्मूला एंड सेंट्रोइड फार्मूला। दीज आर जनरली यूज फार्मूला। इसके अलावा आपको एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन भी, कुछ डेफिनेशन कॉन्सेप्चुअली यूज कर सकते हैं। Then we understood what is intercept of a line. What is intercept of a line? X axis को जहां पे लाइन कट करती है, the point, the x coordinate of the point where the line cuts the x axis is x coordinate. Y coordinate is the y intercept is the y coordinate of the point where the line cuts y axis. What is inclination of a line? Inclination is of a line is angle made by the line with positive x-axis but anti-clockwise direction में, that means non-negative angle, right? Then what is slope? Slope is tan theta, where theta is the inclination. Theta provided theta is not equal to pi/2, because if theta is pi/2, tan theta is not defined, right? Then we understood what if the line is parallel to x-axis, slope is 0, y-axis slope is not defined, right? Then if the two lines are parallel to each other, slopes are equal. If the two lines are perpendicular to each other, product of slopes is equal to -1. या फिर अगर एक स्लोप मालूम है तो दूसरा होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेके सिर्फ साइन चेंज करना है, रेसिप्रोकल लेना है और साइन चेंज करना है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमको पॉइंट्स दिए हैं x1 y1 एंड x2 y2, देन द फॉर्मूला इज y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, या फिर y1 minus y2 डिवाइडेड बाय x1 minus x2, प्रोवाइडेड x1 इज नॉट इक्वल टू x2।
In the next class, I am going to discuss with you the equation of lines. Equation of lines के बाद हम लोग problem start करने वाले हैं. Right? That's it for today. Just go through the video if possible twice and make your own notes. Thank you for now.